Hello everyone, welcome back to Infinity Learn NEET. I hope you all are healthy and safe and a very warm welcome to all of you to our channel. So बच्चों जल्दी जल्दी ये लिंक शेयर हो जाना चाहिए आपके सारे फ्रेंड्स ग्रुप के पास ताकि हम सब अपनी तैयारी एक और बार फिर से स्टार्ट कर सके विथ ओनली इन्फिनिटी लर्न नीट. You all know we started with our NEET 2022 journey for the past couple of days, and we so far have finished two of the biggest weightage chapter of the NEET examination, and that is the biotechnology principle and processes and biotechnology its application. We also started with human reproduction in the previous session, right? So आज human reproduction का second part है that we are going to discuss about. Let me remind you what we have discussed so far in human reproduction. But before I do so, remember to subscribe to our channel if you haven't yet so that you can get the notification of any of the lectures that are taking place on this particular channel by any of the teachers. So सारी subjects physics, chemistry, botany, zoology की तैयारी यहाँ पे होती है with basic conceptual videos. जैसे ही हमारी ये क्रैश कोर्स फिनिश होता है बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चनियर सेशन. सो रैपिड क्विज एवरीथिंग विल बी हियर. बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपने समझा ही नहीं है, तो आप आंसर किसका करोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. एनसीईआरटी के हर एक कॉर्नर से, किसी भी नुक्स या कॉर्नर से वो क्वेश्चन पूछे, हम लोग सही आंसर देंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. वैसी ही तैयारी आप हमारे साथ यहाँ पे कर रहे हो only on Infinity Learn. So guys, let me remind you what we have learned so far in the previous session. If you remember, we talked about the male reproductive system. We talked about the embryonic development of male reproductive system, events of human reproduction, female reproductive system as well. जो एक छोटा सा टॉपिक बच गया था एंड दैट वाज द मैमरी ग्लैंड. मैमरी ग्लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अंडर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नॉर अंडर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ना ही ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ना ही दिस हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द गैमीट. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो गैमीट की कंडक्शन में हेल्प करे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करे. मैमरी ग्लैंड गैमेट थोड़ी ट्रांसफर करता है. नो, इट जस्ट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क. सो ये ना तो प्राइमरी में आता है ना ही सेकेंडरी में आता है. इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलप्ड ऑर्गन. मैमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. बट इन केस ऑफ मेल इट इज rudimentary, vestigial, non-functional. In female mammals, they are functional and helps in nourishing the young ones. So I am going to help you with the structure of the mammary gland. Remember, there is one pair of mammary gland present, one pair, and they are located on the thoracic region. Located on the thorax. Where on the thorax? So this is what I am going to show you. Let's imagine that this is your rib. ये हमारे rib bones है. So I have taken a cross section from the rib bones. Right? So lateral हमने cut किया है. We are observing the structure. So suppose this is the rib cage here, rib bones. So I have taken a cross through the rib bones here. Rib bones. So what are these? These are the ribs. Now, rib bones are attached to each other with the help of, we all know, certain type of muscles are present that are attaching them. And what are these muscles? These muscles are called as intercostal muscle. आपने ये पढ़ा था respiratory system वाले chapter में, we have learnt about it. So these are your intercostal muscles. Let's imagine. So we have all the intercostal muscles here. Fine. So these are intercostal muscles. Now,
the bones are always covered by a muscle, right? Muscle, of course, connective tissue bhi hota, and then there is also presence of muscles. So let's imagine yahan pe kuch muscles present hai, right? So these are certain muscles that are present, and these muscles are called as pectoralis majora muscle, jo aapki chest muscle hai, pectoralis majora muscle. So let me just give me some more time. So this is our pectoralis majora muscle. On the top of this muscle, there is a modified sweat gland present, and this modified sweat gland is called as the breast. So this is our breast here. Fine. In case of male, it is rudimentary. In case of the female, it is highly functional. तो मैं करने क्या वाली हूँ? I am going to divide this page into two different sections. मैं दो different parts में इसको divide करूंगी. क्यों कर रही हूं मैं डिवाइड? ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल और एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में डिफरेंस क्या है ब्रेस्ट में. Not only the size, there are other things that also changes. So here I'm going to show you in non-pregnant female and of course in a pregnant female. So let me just write it a bit upside. इतना जगह नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं. Hi अविनाश, नमस्ते बेटा, नमस्ते and welcome back. So ये structure है in a non-pregnant female. Just give me some time. In a non-pregnant female, and this is in a pregnant female. So मैं दोनों के ही changes आपको दिखाऊंगी, ठीक है? Right. So this is in a pregnant female. So let's see the changes now. You all know the size of the mammary gland or the development of the mammary gland in a female does not take place until unless she reaches the puberty. और adolescence को जब तक वो reach नहीं करती है तब तक आपको क्या दिखेगा कि mammary gland की development नहीं हुई है. So remember this point that mammary gland develops during onset of puberty under the influence of a particular type of hormone, that is estrogen. Estrogen के effect में mammary gland की development होती है, growth होती है, they increase in size, right? And also the size of the mammary gland is different in different types of non-pregnant female, and that depends upon the amount of adipose tissue present. More the obesity, more will be breast size. Okay, so mammary gland develops during the onset of puberty under the influence of estrogen. So please remember this point as well. अब आते हैं, let's talk about the internal part. Internally, what you would see is the presence of certain small lobe-like structure. These lobes are called as alveolar lobes. ये क्या है? ये है आपकी alveolar lobes और alveolus. या फिर हम इसको mammary alveolus भी बोल सकते, because it is present, it's a part of your mammary gland. Alveoli तो हम lungs में भी पढ़ते हैं, right? So this is the mammary alveolus. Each of these alveolus, they are lined by certain epithelial cell. See, your mammary gland is a modified sweat gland, ठीक है? So of course they are supposed to produce something. Gland का मतलब ये glandular, it will secrete something. So ऐसे कई सारे आपको alveolar glands इस तरह से alveolus दिखते हैं. And all these alveolus in a non-pregnant female are smaller. They are very smaller, right? And they are clustered together inside a mammary lobe. This is a mammary lobe, a single mammary lobe. There is another such mammary lobe. How many such mammary lobes are present? 15 to 20 in each breast. So these are mammary lobe. They are present around 15 to 20 in each breast.
Okay. Now, if you talk about the part or structure of alveolus in a pregnant female, उसमें आपको क्या दिखेगा? That there is an increase in the size. Just give me a moment to draw it a bit more further. Increase in the size of these alveoli. Okay, increase in the size of the alveoli. Similarly, here as well. Why there is an increase? Because in a pregnant female there is release of prolactin. इनके पास प्रोलैक्टिन प्रेजेंट है एंड प्रोलैक्टिन ने क्या किया? साइज इंक्रीज करवा दिया है, राइट? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. देयर इज मिल्क फिलिंग अप इनसाइड द alveolus. That's why it is swelling up. So what has happened here? So the alveolus or the alveoli swells up due to formation of milk by, of course, prolactin. In a pregnant female only you will see prolactin. In a non-pregnant female it is absent. I will tell you how and why. Okay, so see here, this is about nothing but the alveoli. So they also have covered by these mammary lobe. They are also present inside the mammary lobe here. So you see 15 to 20 such mammary lobe present in each breast. अब हर एक alveoli से milk formation होने के बाद they will come out through these ducts. These ducts are called as mammary duct. Okay, these are the mammary duct. They are small alveolar duct that are coming out and they all join the mammary duct. Okay, mammary duct. Just give me some more time to finish with the structure. Okay, so here we go. So what are these? These are alveolar duct. Okay, what are these? These are your mammary duct. Fine. So all these ducts, they come out in the form of mammary duct, and the mammary ducts, they all joins or they all form a sac-like structure here. All of them, they form a sac-like structure here. This one as well. Okay, sac-like structure. So the sac-like structure is called as mammary ampulla or lactiferous ampulla. So this is lactiferous ampulla और साइनस भी आप इसे बोल सकते हो, राइट? और मैमरी एम्प्यूला भी आप इसको बोल सकते हो. सो देयर द मिल्क गेट स्टोर्ड फॉर सम टाइम. सो ये जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन हुई है यहाँ से, ऑल द मिल्क दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द एंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड एंड दे आर स्टोर्ड हियर इन द lactiferous ampulla, not during the pregnancy, after the pregnancy, under the influence of prolactin. Okay, अब क्या हुआ यहाँ पे? Immediately there will be the suckling of the baby. Whenever the baby suckles after birth, the milk stored in the lactiferous sinus will come out through lactiferous duct outside. Outside how? So this is how it comes outside. Just give me a moment here. Yes, so we are almost done. You just have to give me some more time. Okay, like this. So these areas, these openings are called as teats or nipples. So these are nipples or teat. It's a single one, so I will just write nipple or teat here. Fine, nipple or teat. Fine. Now the nipple of a pregnant lady is surrounded by a very dark color areola. These are pigmented tissue, and the nipple in a non-pregnant female is also covered by a dark color pigmented region, but it is lighter than in a pregnant female. So this region is called as areola. These are both called as areola. So these are pigmented skin.
they have more and more amount of melanocytes present in them, and the melanocyte will produce more melanin in a pregnant lady. That's why the areolar area becomes more dark. So this is the pigmented skin layer, forming a concentric circle around the nipple region. So as I just said, the size of the breast is decided by the presence of number of certain adipose tissue. So there are the adipose tissues present inside them. So let me choose a color here. So these are the adipose tissue that are present in between these alveolar, mammary lobe. So these are the adipose tissues. So adipose tissues. Fine. So let me write it here. We have the adipose tissue. Adipose tissue. Okay, fine. So is that clear? Up to here is clear. I have given you two different scenario, non-pregnant female and in a pregnant female. You see both the scenarios here. Is that clear to everyone? किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, जल्दी जल्दी पूछ लो. एंड ये सेशन लाइक होते रहना चाहिए, लाइक बटन पे हिट करते जाओ, एंड जस्ट कीप ऑन शेयरिंग द लिंक विथ एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड with the help of Infinity Learn NEET, and we can help them out nicely. Okay, so guys, so let's continue with the next of this topic here, how the milk regulation or formation of milk is regulated. I just told you milk is formed only at the end of the third trimester, end of the pregnancy. तो वो बनता कैसे? सबसे पहले देखो, हाइपोथैलेमस का ही मेन रोल है जो भी है. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. एक तो वो प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन. सो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? इसका दूसरा नाम है डोपामाइन. रिमेंबर दैट, डोपामाइन. ये प्रोड्यूस होता रहता है इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल. इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, तभी एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में यू विल नॉट सी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बिकॉज दे विल इनहिबिट प्रोलैक्टिन. इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, PIH, prolactin inhibitory hormone, inhibits prolactin synthesis. Prolactin synthesis. Or prolactin release, you can just write. Prolactin release from where? From the hypothalamus, your adenohypophysis. But in a pregnant female, what do you see? There is production of prolactin releasing hormone. Hypothalamus produces either releasing hormone or inhibitory hormone. So prolactin releasing hormone is produced. It is also called as PRH. So, and this is the case in pregnant female during the end of third trimester and post parturition. That means after the birth of the baby. Okay, post parturition. So what do they do? The prolactin is going to send a positive feedback to the adenohypophysis. So somewhere here बच्चों यहाँ पे adenohypophysis भी आपका present है. You all know adenohypophysis is under the control of hypothalamus. Adenohypophysis क्या है? Anterior pituitary. Adenohypophysis here. So you will also see that this was the hormone which was inhibiting them. ये जो आपका hormone है, sorry, this particular hormone was inhibiting them, before pregnancy, right, or throughout the pregnancy. But prolactin के release के वजह से during the third trimester or post parturition, what do you see? The adenohypophysis releases prolactin. ये क्या release करता है? Prolactin. What does the prolactin does? The job of the prolactin is nothing but it stimulates the alveolar epithelium. Okay, alveolar epithelium. That means the mammary alveolar epithelium to synthesize milk. That means milk production में ये help कर रहा है. Ejection अभी भी नहीं हुआ.
Ejection कब होगा? Ejection is done by another hormone of the hypothalamus itself, and that is oxytocin. Oxytocin, it helps in ejection of milk. Oxytocin is a hypothalamic hormone. Ejection of milk. Right? So this is how exactly this happens. And do you know that both oxytocin and prolactin, they have a negative effect on hypothalamus and they prevent the formation of GnRH. वो GnRH की formation को रोकता है. For the first 6 months, for up to 6 months, the oxytocin and prolactin level is so high that it prevents GnRH. That means 6 महीने तक कोई भी menstrual cycle नहीं चलता है. बट सिर्फ 6 मंथ तक क्यों? उसके बाद क्या प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन कम हो गया या गायब हो गया? क्या मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है? नो, ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी सीन अप टू 1.5 years as well. Milk production is continuous, but the amount of milk production has declined because oxytocin and prolactin कम हो जाता है after 6 months. Right? थोड़ा कम हो जाता है वो amount. इसीलिए as they have declined, nobody is there to inhibit the GnRH. So again the menstrual cycle starts after 6 months. 9 months तक तो already menstrual cycle बंद था when the lady was pregnant. That was due to a different hormone. That was progesterone. अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं, अब तो पार्चुरेशन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन तो गया, वो तो गायब हो गया है बॉडी से, अब प्रेजेंट है नहीं. लेकिन तब भी जीएनआरएच को बंद करवाना है. कौन करता है? ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन का हाईएस्ट लेवल. ये दोनों टॉपिक क्लियर है सबको? द स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड द हार्मोनल रेगुलेशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन. यस एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस. Any doubts, guys? Please feel free to ask me in the chat box section here, or else we are going to continue with the next part. Avinash beta, clear hai aapko? Just give me one moment. Okay, guys. So let's continue with the next part. Pathway of milk. How is the milk formed? From where is the milk from, and how does it flow outside? We all know. We just learned that the milk is produced in the alveolar epithelium. So from the alveolar epithelium, the milk will move out through alveolar duct. हमने अभी डायग्राम में भी ये देखा, alveolar duct. alveolar duct से वो mammary lobe से बाहर आएगा via mammary duct. मैमरी डक्ट ने उस मिल्क को कैरी करते हुए कहां पे जाके स्टोर किया है? मैमरी एम्प्यूला, जिसका दूसरा नाम है लैक्टिफेरस साइनस या लैक्टिफेरस एम्प्यूला. राइट? मैमरी एम्प्यूला और लैक्टिफेरस साइनस. राइट? लैक्टिफेरस साइनस. अब कहां पे जाएगा ये पर्टिकुलर मिल्क? ऑफ कोर्स फ्रॉम द लैक्टिफेरस साइनस. नाउ द मिल्क, whenever the baby suckles on the teats, the lactiferous sinus will eject out the milk under the influence of oxytocin via lactiferous duct to outside. कहां पे गया ये? outside through teats. Okay, through the teats. Fine. So this is about the pathway of milk flow in a postpartum female, you can say. Right. Fine. So this is about all the structures, reproductive organs present in a male and a female. कुछ पार्ट हमने previous session में पढ़े थे, कुछ पार्ट अभी पढ़ रहे. अब आगे बढ़ते हुए let's now talk about gametogenesis. तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से gametogenesis आपको पढ़ाने वाली हूँ, both spermatogenesis and oogenesis if the time permits. पहले हम spermatogenesis से शुरू करते हैं. Before we start with that, gametogenesis, remember, is the second event of reproduction. पहला event क्या था? पहला event of human reproduction, gametogenesis. So gametogenesis करता कौन है? गोनैड्स. तो हमने गोनैड्स के बारे में तो देखा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा. अब हम फर्स्ट इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, नॉट सेकंड, first event. I am so sorry about that. Gametogenesis, that is formation of gametes. You all know two different types of gametes are formed. So there is formation of a male motile small haploid gamete, and there is formation of a female non-motile
large haploid gamete. Right? Okay. Now, when we talk about these gametes, the processes that helps in their formation are named as such. This is called as spermatogenesis. So sorry. Spermatogenesis, and this is with the process which is called as oogenesis. There are lots of differences between these two processes, which we will be learning gradually. The process of spermatogenesis takes place in the testis. हमने testis का structure पिछले class में देखा था diagram में, right? And of course, I have drawn hand-drawn diagrams there, and this takes place in the ovaries. So let's focus on the spermatogenesis process and oogenesis process. Whatever the process is, दोनों अगर आप gametogenesis को देखो, they go through 3 different phases. तीन different phase होता है. जो पहला phase है आपका multiplication phase. इसमें क्या चल रहा है? In multiplication phase, you will just see mitotic division. Only mitotic division of germinal epithelium मतलब सेल डिवीजन चल रहा है, जो नॉर्मल आपके बॉडी के कहीं पे भी माइटोसिस चलता है ना कि सेल नंबर को इंक्रीज किया जाए, वही चल रहा है. ओनली माइटोटिक डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia. That means आपने मल्टीपल कॉपी बना ली इन लोगों की, oogonia. So these are all 2n cell. तभी तो माइटोटिक डिवीजन है ना, इक्वेशनल डिवीजन, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं. अब नेक्स्ट में क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया इज मदर स्पर्म सेल, oogonia इज द मदर oocyte सेल. अब नेक्स्ट फेज में आता है, देखो ये कॉमन फेजेस है, पहले हमें कॉमन फेज पढ़ना है, देन वी विल फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द फेजेस कि कैसे आपका प्रोसेस चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, oogenesis में, अलग अलग तरीके से, और उनकी डिफरेंसेस क्या है. हर साल ये डिफरेंसेस से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि उसको जीएनआरएच हार्मोन की जरूरत है. लेकिन जो आपकी oogenesis है दैट स्टार्ट्स बिफोर प्यूबर्टी, एट द एज व्हेन द गर्ल इज जस्ट अ फीटस. फीटल डेवलपमेंट के वक्त ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद, दैट इज 11, 12 और 13 इयर्स ओल्ड के बाद. दूसरा डिफरेंस आप क्या देखोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिवीजन होता है ना मियोसिस वाला, विच इज इक्वल डिवीजन, 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल्स बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. बट इन oogenesis अनइक्वल डिवीजन टेक्स प्लेस, एक लार्ज oocyte बनेगा और एक छोटा पोलर बॉडी बनेगा. सो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिफरेंशिएशन हुआ. सो ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस है जो हम पढ़ने वाले. पहले चलो कॉमन फेज पढ़ लेते हैं, ठीक है. ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में आप क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन तो हो गया भाई, और हमने मल्टीपल कॉपीज में स्पर्मेटोगोनिया oogonia बना लिया है. अब ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, there is no cell division here, it is just a cytoplasmic gain. So the spermatogonia, or we can just write each spermatogonia gonium and oogonium gains cytoplasmic material. That means they will keep on gaining more and more cytoplasmic chemicals and will increase the size, grow हो रहे हैं वो size में, right? So gain cytoplasmic material and grows or becomes active primary spermatocyte एंड प्राइमरी oocyte रेस्पेक्टिवली. तो यहां पे आपने कोई डिवीजन देखा? कोई भी सेल डिवीजन नहीं चल रहा है, जस्ट वो ग्रो हो रहे हैं बाय गेनिंग मोर एंड मोर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, दैट्स ऑल.
A primary oocyte, primary spermatocyte is ready, it is active cell, they are ready to form gametes by meiotic division. So tab aata hai aapka third wala phase, maturation phase. What happens here? Here the primary spermatocyte and primary oocyte undergoes nothing but meiosis 1. मियोसिस 1. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. हमने ऑलरेडी ये क्लास 7:15 से स्टार्ट किया है, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों. तो अगर आपने मिस किया है कोई भी टॉपिक तो रिकॉर्डिंग में पक्का देख लेना. अभी आगे इस यहां से पढ़ो, डोंट वरी. जस्ट अभी मैंने गैमेटोजेनेसिस शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लिंक वगैरह कुछ नहीं टूटेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, सो इट अंडरगोज मियोसिस 1, टू फॉर्म secondary spermatocytes and secondary oocyte and first polar body और पोलोसाइट भी हम इसे बोलते हैं रेस्पेक्टिवली. सो ये हो गया एक रेस्पेक्टिवली, ये हो गया आपका एक मैच्योरेशन फेज. एक और होता है फर्दर मियोसिस 2. Further, each secondary spermatocyte undergoes meiosis 2. So दोनों ही टाइप ऑफ meiosis या meiotic division आपके maturation phase में चल रही है. Meiosis 2 to produce spermatids and secondary oocyte, meiosis 2 is conditional. Why I am writing conditional? Because in case of spermatogenesis, you will find all secondary spermatocyte has completed its meiotic division. उनकी पूरी proper spermatogenesis complete होती है. But in oogenesis, not all oocyte hardly get any chance to complete their oogenesis. Because oogenesis taking place every month, right? It has already started before birth और वो every month चल रहा है post puberty. And every month only one oocyte, primary oocyte completes meiosis 1 and form a secondary oocyte. That secondary oocyte waits for a sperm to come. That means fertilization. So do you see a female, suppose she has started her menarche or menstrual cycle from at the age of 12. Every month she is menstruating. So every month will there be completion of meiosis 2? Then she'll get pregnant every month. It's not possible, no? So how many how many children do you see per family or per couple? Hardly 2, most maximum. Usually 1 aajkal hai, but usually 2 can also happen. So that means if there are 2 children, 2 oocytes were able to, secondary oocyte were able to complete meiosis 2. So hardly वो complete कर पाते हैं अपने oogenesis process को, not हमेशा. ठीक है, तो ये आपके कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. अब हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं. पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे. So process of formation of spermatozoa in the seminiferous tubule of testis is called as spermatogenesis. ये structure और ये property तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. If you remember, I told you that these are the seminiferous tubule. 2 to 3 are present in per testicular lobules and seminiferous tubules are lined by a basement membrane. Right? Each basement membrane is produced by what? A germinal epithelium. We all know germinal epithelium is cuboidal epithelium. ये cuboidal cells है, epithelial cells है. Germinal epithelium, we all know that they undergo the process of mitosis division, equal division to form स्पर्मेटोगोनिया. ये कौन सा फेज था? मल्टीप्लीकेशन फेज. तो कई सारे स्पर्मेटोगोनिया वो बनाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो. जर्मिनल एपिथेलियम अंडरगोइंग माइटोसिस टू फॉर्म 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म सेल. एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी. अगर आप टाइप ए को देखो, टाइप ए इज यूजुअली अ स्टेम सेल, ये डोरमेंट रहता है, और it can convert into a type B type of germ cell whenever necessary.
टाइप बी क्या करता है? दे आर द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म. सो टाइप बी के बारे में यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज आर द प्रीकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और या फिर आप स्पर्म्स भी लिख सकते हो. कैसे? ईच टाइप बी कन्वर्ट इनटू अ स्पर्मेटोगोनिया. ये स्पर्मेटोगोनिया अब ग्रो करेगी, ग्रोथ फेज. अब तक तो आपको मल्टीप्लिकेशन फेज दिखा था, मेनी स्पर्मेटोगोनिया वेर फॉर्म. सो स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी? स्पर्मेटोगोनिया विल बिकम अ primary spermatocyte by a growth phase. They are just gaining cytoplasmic material, not showing any division. Each primary spermatocyte will now undergo meiosis 1 to form two secondary spermatocyte. तो अब जाके आपने देखा कि प्लॉइडी डिवाइड हुई है. अब तक 2n ही था, डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, दे वर ऑल डिप्लॉइड. अब जैसे ही मियोसिस 1 हुआ, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन चल रहा है. जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन चला, आपको क्या दिखेगा कि ये जो 2n था, डिप्लॉइड था, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होके n एंड n हैप्लॉइड हो गया है. 22 प्लस x, 22 प्लस y, क्योंकि कितने टोटल क्रोमोसोम थे 46 में? 44 प्लस xy. अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दे आर नाउ गोइंग टू शो मियोसिस 2. जैसे ही ये मियोसिस 2 शो करेगी, so this was meiosis 1 guys, this one was meiosis 1. So when they will show meiosis 2, they are going to produce spermatids. Spermatids are again, meiosis 2 is another equational division. So आपको 4 spermatid दिख गए, right, from 2 secondary spermatocyte. Correct? So 22 plus x, 22 plus x from here, 22 plus y, 22 y from this other spermatocyte. अब spermatogenesis finish हो गया? नहीं हुआ. Spermatids that are produced are very thick. Look here. यहाँ पे इतने थिक से सेल है, इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म है, छोटा सा टेल है. सो दे आर सो हेवी टू मूव, दे आर अनेबल टू मूव. So now they have to undergo the process of spermiogenesis. So they have to undergo the process of spermiogenesis. क्या है spermiogenesis? Spermiogenesis is the process of conversion of spermatid into a functional spermatozoa. So spermiogenesis में आप क्या देखते हो? Spermiogenesis here is, let me change the color. It is just, structural. It brings structural maturity of spermatozoa. Structural maturity of spermatozoa. Right? So what is the structural maturity? What do you mean by that? Let's talk about it. ओके देखो, ये एक स्पर्मेटाटिड का स्ट्रक्चर है. दिस इज अ स्पर्मेटिड हियर. लुक एट द वाइड स्प्रेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ ह्यूज एंड एबंडेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. कितना थिक है. लुक एट द न्यूक्लियस विच इज राउंड एंड लार्ज. लुक एट द गोल्गी बॉडीज विथ नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी. लुक एट द स्कैटर्ड माइटोकॉन्ड्रिया. लुक एट द वेरी फीबल एंड वेरी स्मॉल एक्सियल फिलामेंट एंड अ सेंट्रोसोम. अब इसको मॉडिफाई करके बनाना है ये वाला स्ट्रक्चर. A slender, movable, motile, structural maturity आनी चाहिए, not functional. Functional maturity मतलब motility, वो तो एपिडिडाइमिस में आता है, अभी तक नहीं आया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में structural maturity आ जाती है. कैसे बना? Look at this structure now here. First, what do you see? You see that there is reduction of cytoplasm. बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो गया है, उसके बारे में हम आने वाले हुए. सबसे पहले देयर इज एन इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस गेट्स इलोंगेटेड. इलोंगेट होता है एंड देन उसके ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्रोसोम. व्हाट इज एक्रोसोम? मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज. सो दीज आर मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज. Okay, so this modified Golgi bodies started showing certain enzymatic activities, and these enzymes are called as proteolytic enzymes, spermalysin. ये एंजाइम्स क्या काम करता है? ये एग के चारों तरफ जितने भी लेयर्स है, उन लेयर्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, ताकि एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पर्म की एंट्री हो सके, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो. दूसरा is the presence of the proximal centriole. So look at the proximal centriole here. Proximal centriole helps in the cleavage of the secondary oocyte. Centriole हर एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आपकी oocyte का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द meiosis division, cleavage is centriole is lost.
So if centrioles are lost, who is going to, stretch the spindle fibers? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. तो मेटाफेस में सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स एक सेंटर में आ जाते हैं, फिर एनाफेस में पेरीफेरी में चले जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होके. तो वो कौन खींचता है? योर सेंट्रियोल. So if they do not stretch them, how cytokinesis will take place? So for cell division, it is necessary to have a centriole. इसीलिए proximal centriole present है. दूसरा आपके पास यहाँ पे distal centriole आया. ठीक उसके नीचे distal centriole का काम क्या है? It forms the axial filament on the tail and the tail fiber. Okay. अब देखो, the tail fiber or axial filament formed, it goes along the length of the middle piece and also the tail, and there is also a naked end piece present which is not covered by any plasma membrane. Next change is the mitochondria. So there were scattered mitochondria present. अब ये scattered mitochondria सब spirally arrange हो जाएंगे. And this spirally arranged mitochondria is able to provide more and more amount of ATP, and it is also called as Nebenkern. So Nebenkern कोई अलग structure नहीं है, ये mitochondrial spiral को ही हम Nebenkern बोल रहे हैं. अब देखो, मैंने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बहुत रिड्यूस हो जाता है. कितना रिड्यूस होता है? सो साइटोप्लाज्म रिड्यूसेस एंड द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म accumulate near the half of the nucleus, entire neck piece and the entire middle piece called as man sheet. So man sheet is the concentrated cytoplasm covering the half of nucleus, neck and the middle piece. Lastly, the plasma membrane also covers the entire spermatozoa, as you can see here. Right? So it takes the shape of the slender spermatozoa. This is a structurally mature spermatozoa which happened inside the seminiferous tubule. फंक्शनल मेच्योरिटी अभी तक नहीं आई है, वो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आएगी. अब ये जो आपने पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, इसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है? There are 4 hormones that are responsible, right? 2 of them are pituitary hormones. So these are pituitary hormones. Okay, pituitary hormones. And 2 of them are testicular hormones. They are produced by the testes. Testicular hormones. Let's talk about these hormones and their regulation. Again, सबसे पहले हम क्या लेंगे? Hypothalamus. क्या कर रहा है hypothalamus? Hypothalamus is releasing the hormone which is called as GnRH, gonadotropic releasing hormone. What does it do? The gonadotropic releasing hormone send a positive feedback to the adenohypophysis. So adenohypophysis is the anterior pituitary. ठीक है. अब क्या हुआ? एडेनोहाइपोफाइसिस को एक ट्रिगर मिल गया, पॉजिटिव फीडबैक मिल गया. अब वो आसानी से क्या कर सकता है? इट कैन रिलीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. क्या है वो हॉर्मोन्स? एक तो ऑफ कोर्स FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एंड द अदर वन इज ICSH, that is interstitial cell stimulating hormone, also called as luteinizing hormone. अब देखो ये हार्मोन्स क्या करते हैं. सबसे पहले FSH का काम क्या है? FSH will always trigger, मतलब फिर से पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सर्टोली सेल. ये किस पे इफेक्ट करता है? सर्टोली सेल. एंड विल आस्क द सर्टोली सेल टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. 3 अलग अलग हॉर्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले एक इनहिबिन, दूसरा AMH, तीसरा ABP. क्या है इनके फुल फॉर्म्स? चलो बताया जाए. AMH stands for एंटी मुलेरियन हार्मोन. ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन. फॉलोड बाय ABP. ABP का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. चलो इन सब के फंक्शन को अब देखा जाए कि इनका फंक्शन क्या है, करता क्या है ये सारी चीजें, है ना.
AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है ऑफ कोर्स इन अ fetus as well, in a male fetus, in a male embryo, and it prevents the growth of the female reproductive system in a male. Do you know that be it female or male embryo दोनों में ही precursors present होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. सो मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन. ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है एक क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम में एक रीजन प्रेजेंट है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, SRY भी बोलते हैं उसको, जीन. वो जीन इस एंटीमुलेरियन हार्मोन को कोड करता है. हार्मोन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज प्रोटीन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन. दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन हियर. सो इट सप्रेसेस दी ग्रोथ ऑफ द मुलेरियन डक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है. तो जैसे सप्रेस हो गई, अब कौन बढ़ेगा? उल्फियन डक्ट. वुल्फियन डक्ट सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाता है, तभी मेल ऑर्गन्स बनते ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट. अब फीमेल में ये वाई क्रोमोसोम तो है नहीं, तो ये जीन ये हार्मोन बन ही नहीं सकता, उनके पास वो जीन ही नहीं है. बट उनको जरूरत ही नहीं है, उनको तो मुलेरियन डक्ट को बढ़ाना है. मुलेरियन डक्ट विल ग्रो इन टू फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एक्सेट्रा. तो उनमें वुल्फियन डक्ट को किसने सप्रेस किया है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओवरी से प्रोड्यूस होता है ना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, सो मोस्टली ईस्ट्रोजन विल सप्रेस इट. एनीवे, नेक्स्ट वी हैव एबीपी. एबीपी का काम अभी रुको, अभी रिज्यूम करेंगे हम. देखो, ICSH किसको स्टिम्युलेट करता है? एज द नेम सजेस्ट, इंटरस्टिशियल सेल. इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेइडिक सेल्स. लेइडिक सेल्स, ओके. ये लेइडिक सेल्स अब क्या करेगा? इसका काम है टू प्रोड्यूस. तो ये स्टिम्युलेट कर रहा है, दिस इज पॉजिटिव स्टिम्युली है ना, पॉजिटिव फीडबैक. सो इट विल स्टिम्युलेट द सेल्स टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. बट ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है ये थोड़ा डाइल्यूट होता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए. सो ये एबीपी जाके इसको कॉन्सेंट्रेट कर देती है. सो इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक हियर. सो इट हेल्प्स इन, इट concentrates the testosterone for, of course, the formation of sperms, right, for spermatogenesis. अब स्पर्मेटोजेनेसिस आप हमेशा शो करते रहोगे? नो. इतनी एटीपी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपके बॉडी में होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एटीपी वेस्ट मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है. बट हमें जब स्पर्म्स की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी देयर आर स्पर्म्स फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, व्हाई टू वेस्ट, राइट, वेस्ट आवर एनर्जी. सो इनहिबिन, if there is too much of release of FSH and Sertoli cell को बहुत ज्यादा स्टिम्यूली मिल रहा है, तो इनहिबिन भी ज्यादा बनेगा. सो ज्यादा इनहिबिन सेंड अ नेगेटिव फीडबैक टू FSH and stop the production of ABP. No ABP, no concentrated testosterone, no spermatogenesis. But dilute testosterone बनता जा रहा है. ये dilute testosterone कुछ secondary sexual characters को ट्रिगर करता है. फेशियल हेयर, डीप वॉइस, राइट, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जितने भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है दैट आर ट्रिगर्ड बाय टेस्टोस्टेरोन, सेक्सुअल अर्ज एज वेल. ये है आपका पूरा का पूरा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इतना सबको समझ में आया? यस. एनी डाउट्स गाइस? इससे ज्यादा बेटर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा. जितने भी हैंड ड्रॉन नोट्स आपको इन्फिनिटी लर्न नीट में मिल रहा है, माय ओन हैंड ड्रॉन डायग्राम्स, पिछले क्लास में मैंने आपको फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था. आई डू नॉट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम एनी वेबसाइट बिकॉज दैट इज नॉट द वे ऑफ माई टीचिंग. बिकॉज जब आप धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, एक एक पार्ट बना के, वो ज्यादा बेटर तरीके से आपके दिमाग में एक आइडेटिक मेमोरी बनती है, राइट. आइडेटिक मेमोरी ऑलवेज helps you in recalling stuff better during the examination. So that is why I choose to teach in this way, and I will continue to do so till the end of my time. Okay, so guys, I hope this was useful for every one of you. We are going to keep it up to here. In the next session, we are going to continue with oogenesis, again with the same diagrammatic representation and flowchart study.
So for then stay tuned only to infinitylearn.com. So बहुत सारा topics हमें अभी और include करना है और complete करना है. Don't worry about it. And yes, you will be getting the notes. My own annotated notes will be given to you in the Telegram channel. So the link is given in the description box for the Telegram channel. Click onto it and join the Infinity Learn Telegram group, which will help you to get all the notes, daily updates of every classes of every particular teacher and the timings. Okay, so thank you so much guys for joining the session. Like the session if you have liked my explanation, share it with your friends and your peers, and do subscribe to the channel to get further notifications, and keep on learning quality content and quality education. Thank you so much guys.